Hello everyone, I hope you all are doing well and you all are in a good health. So today's topic we will describe briefly about myocarditis, what actually myocarditis is, its pathology, diagnosis, treatment, clinical features. We will describe briefly so that you can understand the concept of myocarditis. So हम start करेंगे myocarditis. Actually myocarditis होता क्या है? So what defines myocarditis? Actually, myocarditis is defined. It is usually defined as the inflammation. It is defined as the inflammation of myocardium. It is defined as the inflammation of myocardium. Myocarditis क्या होता है? Inflammation होता है myocardium का. या usually these are the inflammations causing injury to myocardium. Myocardium हमें पता ही है. Actually our heart has three layers. If we see ये हमारा heart है. Just a rough diagram. It has three layers usually. One is first layer is pericardium, which is outermost layer. Then we have myocardium briefly, and then we have endocardium. They have some other layers like additional layers, subendocardium or submyocardium, but we will describe ये हमारी तीन basic layers है. Outermost epicardium, middle intermediate which is myocardium, and the inner one which is endocardium. And जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इसकी इन्फ्लेमेशन होती है. द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज़ नोन एज मायोकार्डाइटिस. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें रखना है याद, व्हाट इज़ मायोकार्डाइटिस में, वो हमें याद रखना है दैट इट इज़ द इन्फ्लेमेशन. एक इन्फ्लेमेशन होता है विच आर primary cause of injury, which are primary cause of injury to myocardium and myocardiocytes. इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली इसका मतलब क्या होता है कि जो ये इन्फ्लेमेशन होता है वो, इफ़ दिस इन्फ्लेमेशन ऑकर्स आफ्टर इंजरी, अगर ये जो इंजरी हमें इस मायोकार्डियम पे जाता है, मायोकार्डियम पे जो इंजरी होती है, अगर वो इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम मायोकार्डाइटिस नहीं कहते. बिकॉज जो मायोकार्डिटिस हम उस चीज़ को कहते हैं अगर इसमें प्राइमरी कॉज होता है विच इज़ नॉट आउटसाइड इंजरी और एनीथिंग एल्स बट इट इज़ अ प्राइमरी कॉज, उसको हम फिर मायोकार्डाइटिस कहते हैं. अदरवाइज मायोकार्डाइटिस अगर इंजरी, अगर इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी हो गई, इट इज़ नॉट कॉल्ड मायोकार्डाइटिस. सो हम चलते हैं आगे. द बेसिक, इफ़ वी गो विद द etiology, what is the etiology, basic etiology of these myocarditis. So studying with the etiology of myocarditis, the most common etiology of myocarditis, it is of infectious cause. It is of infectious cause. The most common etiology है वो infectious cause होती है. और उस infectious cause में भी कौन सी most common है? It is viral cause. It is viral cause, most common. Most commonly the myocarditis is caused by viruses. और इस viruses एक्चुअली होता क्या है? यूजुअली बहुत सारे जो viruses होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे viruses होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कॉक्सैकी वायरस, both type A and D. There may be ecovirus, there may be influenza virus, or there may be cytomegalovirus, there may be HIV, etc. These were some of the viruses. And ये actually viral cause से होता क्या है? They usually, these viruses ये क्या करते हैं? They attack the myocardium directly. They attack the myocardium directly. और जब इन्होंने मायोकार्डियम को अटैक किया डायरेक्टली, they release
their viral proteins, release viral proteins. जब उन्होंने मायोकार्डियम पे अटैक किया, वहाँ पे सेटल होने के बाद वो वहाँ पे वायरल प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, और जिस वायरल प्रोटीन की वजह से आवर इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड देयर इज एन जब इम्यून देयर इज एन अटैक ऑन एंटीजेन्स. ये एंटीजेंस वायरल एंटीजेंस होते हैं, बट दे इवन रिजेंबल these antigens resemble that of the which may resemble that of the myocardium, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करता है. देयर इज एन इम्यून अटैक बाय टी सेल्स. ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम फिर से रिवाइज करते हैं कि वायरसेस अटैक डायरेक्टली अटैक करते हैं मायोकार्डियम पे, और मायोकार्डियम पे अटैक करने के बाद रिलीज देयर वायरल प्रोटीन्स, जिसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उन एंटीजेंस पे अटैक करते हैं, और इवन कि दोज एंटीजेंस रिजेंबल द एक्चुअल मायोकार्डियम, जिसकी वजह से द इम्यून अटैक मीडिएटेड बाय द टी सेल्स विच अटैक द मायोकार्डियम एंड काज इट इज डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट and pathophysiology. So this was the most common etiological cause. Further moving on, there are other causes as well. We can move on with there are chlamydial causes. For example, sticky, etc. There may be rickettsia. There are bacterial causes as well. जिसमें we have a lot of bacteria, like there are corynebacterium, diphtheria. We will not count each and every bacteria, but most common causes: corynebacterium, diphtheria, or there is Borrelia burgdorferi. Even there are fungal causes. Fungus can cause myocarditis, in which like candida, which can cause candidemia. There is also protozoal causes, in which we have, like for example, Chagas disease caused by Trypanosoma cruzi. We have helminthic causes as well, in which we have like trichinosis. These were some of the pathological causes, viral causes. These are some bacterial causes, fungal causes. और उसके बाद हमारा और एक मेन कॉज आता है इसमें, जो हम क्लासीफाई करते हैं एज पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर immune mediated reactions in our body. Immune mediated reactions, ये सेकंड टाइप ऑफ etiological फैक्टर होता है. और इसमें कौन से टाइप्स आते हैं? दे कंटेन rheumatic heart disease. In this category there is this rheumatic heart disease which is caused by streptococcus. ये हमें सबको पता है streptococcus कौन सा, बीटा hemolyticus, which is the Lancefield group A. This is the particular bacteria causing rheumatoid heart disease. You should remember this. Further on, it will be post-viral causes. It can be drugs which can have toxinous mediated. There may have SLE disease, systemic lupus erythematosus.
There can have transplant rejection. These are some of the important immune mediated reactions which can cause myocarditis. These all causes when the myocarditis happens, by this it causes myocardium to become इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, मायोकार्डिटिस बिकम लूज, फ्लैबी, इन्फ्लेम्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज जिसकी वजह से क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कंट्रैक्टिबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर हमारा मायोकार्डियम डैमेज होगा, लूज बन जाएगा, इट कंटेन्स मसल्स होते हैं जो लूज बन जाएंगे, फ्लैबी बन जाएंगे, इन्फ्लेमेड बन जाएंगे, जिनकी वजह से फेलियर ऑफ कंट्रैक्शन हो जाएगा हमारे हार्ट का। There will be failure of contraction, or definitely, or in simple words, the failure of contraction can cause heart failure. In simple words, this can cause heart failure. It is accompanied with other disease, other symptoms. It can cause heart failure. It can cause chest pain. और अगर हम देखें हाउ पेशेंट, हमारे पास पेशेंट किन सिम्टम्स को लेके आता है, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मायोकार्डियम में, मायोकार्डाइटिस में। यूजुअली चेस्ट पेन हमने मेंशन किया, चेस्ट पेन इज प्रेजेंट, इवन देयर आर arrhythmias, cardiac arrhythmias are present, cardiac failure clinical feature होता है, there may be certain cardiac death is also present, even there can be accompanied by fever as when caused by bacteria or other pathological organisms. So these are some of the major clinical features. These all the major features are associated with other findings. अगर हम देखें इनमें हम और फाइंडिंग्स देखते हैं मायोकार्डिटिस पेशेंट में, यूजुअली इनमें हम जो कि S1 साउंड होती है, इट इज़ सॉफ्ट S1 साउंड, वी कैन फाइंड इट बिकॉज इट हैज़ डायलेटेड हार्ट मायोकार्डियम and it has this dilated heart myocardium, that's why it can cause less contractile failure, that can cause soft S1 sound. There can be systolic murmur as well as regurgitation. There can be systolic murmur as well as regurgitation. The S3 sound will be positive in this type of patients. We will find S3 sound in those patients. तो बेसिक था ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस इन दीज पेशेंट्स। डायग्नोसिस की बात करें, देयर इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस हमें चाहिए इस मायोकार्डियल पेशेंट। इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से वी विल प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म हार्ट डैमेज। और टू डायग्नोज मायोकार्डिटिस we need typically examine doctor needs to typically examine the patient and listen to the heart with a stethoscope. Most importantly, we have to do auscultations. Simple. There may be the use of blood and imaging tests, we will describe it. ये हमारे काम आते हैं जिसकी वजह से हम कंफर्म करते हैं मायोकार्डाइटिस। सो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, अगर हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, इनमें हम देखते हैं साइंस ऑफ हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक किस साइंस ऑफ हार्ट अटैक चेक करते हैं, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन चेक करते हैं, वी कैन चेक द साइंस ऑफ इन्फेक्शंस बाय द ब्लड टेस्ट्स। वो हम किस तरीके से करते हैं, बिकॉज हार्ट अटैक there is a cardiac enzyme test which can check for proteins. There is an enzyme, cardiac enzyme, which can check for proteins. These are related to heart muscle damage, like creatine kinases, MB, etc., which can confirm heart muscle damage. Also antibody blood tests, also antibody blood tests
We can find inflammation markers like ESR. We can find infectious markers, increased WBCs. These are some of the findings. It is diagnosed by myocarditis is also diagnosed by ECG as well as EKG. In this uh, we can find arrhythmias present, etc. Murmurs, as described that, as we already described that myocarditis patient have systolic murmurs at regurgitation. We can do chest X-ray. Even we can have an MRI to detect the pathologies. These are some of the basic diagnostic methods which we can use to detect the patient of myocarditis. Yes, वो कॉमन मेथड्स है जिनकी बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डाइटिस है. और इसके साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट ट्रीटमेंट. यूजुअली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, वी कैन यूज़ corticosteroids, as these are anti-inflammatory, having they can have also an immune they can suppress the immune system. They can also use to also rare types of viral myocarditis as well as giant cell and eosinophilic myocarditis. They are also anti-inflammatory in nature. There are also, we can even use heart medications like beta blockers, even anti hypertension drugs to prevent the load, to reduce the strain on the heart. We can use these medications. We use these medications, as we already described, to reduce the strain. Even sometimes we use diuretics as well. Also, to the underlying cause, if there is an infectious cause, we can use antibiotics also. These are some of the a brief discussion about the treatment. Even there are surgical treatments as well, in which we can treat the myocarditis patient on the basis of surgery. So this was a basic and conceptual topic about the discussion about myocarditis. I hope you have understood it well. This contains all the required information about myocarditis. So I hope you will like it. Thank you very much. See you in the next video.